Hello students. So in this video we will talk about laws of motion. जैसे कि हमें पता है Newton laws of motion are just three basic laws that will let us know what is the relationship in between the motion of an object and the force acting on it. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका मोशन क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशन है. These are all depicted by Newton laws of motion. So what are these three laws exactly? In first law, जिस लॉ को यूजुअली बोला जाता है लॉज ऑफ इनर्शिया, दैट टेल्स अस जब तक आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. दैट मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है until and unless you are applying some external force, it will remain at rest. Similarly, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, देन until and unless you are applying an external force, it will remain in the same path with the same velocity. In the second law, we will discuss that the force acting on a body is nothing but equal to mass into acceleration. That means we can write it down like that, that force is nothing but mass into acceleration. And the third law, it goes like that, that every force that is acting on, let us say we do have two objects. So the force applied by the first object to the second object is actually equal to the force applied by the second object to it, but just in opposite direction. That means let us consider we do have two objects, that is M1 and M2. So the force applied by the first object to the second one, that can be depicted by F21, is actually equal to force applied on the first object due to the second object, just in opposite direction. तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं इसको इन सिंपल लैंग्वेज? अगर दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में बात हो रहा है एंड वी आर कंसीडरिंग वी आर इन अ आइसोलेटेड सिस्टम. सो ओनली दीज टू ऑब्जेक्ट आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. देन वी कैन से कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, that is exactly equal to the force applied by the second object by the first object. The magnitude is same, only the direction changes. So these are the three laws. Now, why we need to know about laws of motion? Newton laws of motions are very important because this is the most fundamental thing which is related to study all the branches of physics. इन लॉज की वजह से हमें एक्चुअल में अपने चारों तरफ जो भी चीजें मोशन में है, सब कुछ की जो बेसिक है वो समझ में आता है. It actually depicts how we walk, how we sit in a position, water कैसे flow होता है, गाड़ी कैसे start हो रहा है, गाड़ी कैसे चल रहा है, each and everything around you can be described by these laws of motion. So to understand the classical mechanics and all the other branches of physics, we need to know about laws of motion. So this is everything you need to know about this term laws of motion.